अब जिस तरह हम ब्रोमिनेशन के केस में regioselectivity डिस्कस कर रहे थे, so can we have regioselectivity in case of hydrohalogenation as well? और इसमें तो ज्यादा काउंट करती है, क्योंकि इसमें तो एक तो डिफरेंट एटम्स हैं, एक H है और एक हैलोजन है, और दूसरी बात यह है कि इसमें कार्बोकेटाइन जनरेशन भी है, ब्रोमोनियम आयन की तरह नहीं है, 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बनती या इंटरमीडिएट साइक्लिक इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होगी, या अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब रिएक्ट करेंगे विद हाइड्रोजन हैलाइड तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट HBr with the molecule that we have already seen। तो इसी तरह के मॉलिक्यूल पहले भी आप देख चुके हैं, 2 मेथल ग्रुप्स एक साइड पे हैं, 2 हाइड्रोजन दूसरी साइड पे हैं। H कहाँ पर अटैच होगा और Br कहाँ पर अटैच होगा, सो दैट इज द क्वेश्चन, और इसी को हम रेजियोसेलेक्टिविटी कहते हैं कि किस रीजन पे H होगा और किस रीजन पे Br जाके अटैच होगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जाके या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं H पे अटैक करेंगे। जब H पे अटैक करेंगे तो कहाँ से अटैक करेंगे, 2 चांसेस हैं आपके पास, कि आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, H यहाँ अटैच हो जाए, कार्बोकेटाइन इस तरफ आ जाए, और ब्रोमाइड आयन जो बना है वो फिर आके यहाँ पर अटैक करके ब्रोमीन यहीं पर लगा दे। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ से अटैक करे और H जो है वो इस कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो जाए और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बने, और फिर ब्रोमाइड आयन यहाँ से आके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करके यहाँ पर अटैच हो जाए। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। Which one would you think would be more feasible? इसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, और इस केस में जो है दैट इज अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो अब जो रेजियोसेलेक्टिविटी का सवाल है वो सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे है। आपने ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है या किस कार्बोकेटाइन के बनने की चांसेस ज्यादा हैं, उसी हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि मैकेनिज्म में तो और कुछ है नहीं, सिर्फ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे ही हम बात करेंगे। सो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जनरल ट्रेंड क्या है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, वो ये है A tertiary carbocation is more stable as compared to a secondary carbocation, which is more stable as compared to a primary carbocation, which is more stable than a methyl carbocation. These are not the only carbocations that you can have. आपके पास conjugated carbocations भी तो हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये है, डबल बॉन्ड है और उसके साथ अगली पोजीशन पे कार्बोकेटाइन हो, ये भी तो है ना, एलिलिक कार्बोकेटाइन, तो ये इन सब से ज्यादा स्टेबल है, ये इन सब से ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। इसी तरह से अगर आपके पास फिनाइल रिंग हो और उसके साथ कोई कार्बन एटम हो जिसपे कार्बोकेटाइन हो, तो ये इससे भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि फिनाइल रिंग के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ गया है। एनीवेज वो तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो जब इस तरह की एग्जांपल्स आएंगे तो हम डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो एलिलिक कार्बोकेटाइन या इसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात हो रही है। तो उसमें जो जनरल ट्रेंड है वो इस तरह से है, ठीक है, टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, व्हिच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पर देखिए, एक जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, द सेकंड वन इज अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी वाइज अगर आप देखें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर रिलेटिवली मोर स्टेबल, जिसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा उसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो ब्रोमाइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपका H जो है वो इस प्राइमरी कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच हो गया, और Br जो है वो यहाँ पर
टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होंगे। तो ये आपके पास इसकी प्रोडक्ट बनेगी। इस रेजियो सेलेक्टिविटी को कौन गवर्न कर रहा है? द मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स रूल आपने पढ़ा होगा। Markovnikov rule comes into play when we are adding hydrogen halide to some unsymmetrical alkene। ठीक है, और ये कहता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो और वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करे, तो हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं अटैच, और हेलोजन जो है आपका उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है आपके पास, तो इसके दो कार्बन हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन कितने हैं? 0 हैं, क्योंकि दो मेथल ग्रुप्स हैं, और इस पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। ठीक है, तो अब आप देखें हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ गया? जिस पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन थे। और ब्रोमीन कहाँ पर गया? जहां पर कम हाइड्रोजन अटैच थे। और वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। So this is how HBr, or sorry, hydrogen halides are added. You can add HCl also across the double bond. So we have just seen through an example that it all depends upon the stability of the carbocation, which you know is the trend is from tertiary to primary. Let's see another example here and see which product can we get. So if we have this 2-pentene, you can see that we have a double bond somewhere in the middle of the chain. And if you want to add HBr across this carbon-carbon double bond, what will happen? Again, you have two sides. So either this H gets attached to this carbon or it gets attached to this carbon. So when H gets attached to this one, to the left one, what you get as a result is a carbocation here, right? And that will allow this bromide ion to attack here, giving you this product, this one. But if it gets attached from this carbon atom, the hydrogen, then the carbocation would be here, and the bromide ion will get attached here. So you will have this product, right? Now, which of these two products is actually formed? Which one do you think will be formed? Or which one do you think will be formed in higher percentage, right? So if you look at the position of this carbon-carbon double bond, in both cases, what you get is a secondary carbocation. But of course, the groups that are attached to the positively charged carbon in both cases, they are different. In this case, you have ethyl groups attached to both sides of this carbocation, and here you have a methyl group and a propyl group. So does that affect the overall formation or selectivity towards a particular product? क्या इनमें से एक ही प्रोडक्ट बनेगी या दोनों बनेंगे? अगर दोनों बनेंगे तो परसेंटेज क्या होगी? So in both cases you have the formation of a secondary carbocation, because Markovnikov's rule is basically it is based on the stability of the carbocation. So you cannot differentiate between the two carbocations, all right? And that is why you might have both of the products, the 2-bromopentane and the 3-bromopentane. तो दोनों products बनने की chances हैं, and both of them will be present in the reaction mixture in almost equal ratio or proportion. The percentage तकरीबन दोनों की same होगी, because we cannot differentiate between them depending upon the stability of the carbocation. You can have molecules in which rearrangement could occur while addition is carried out on an unsymmetrical alkene. तो जब आप HBr की एडिशन करेंगे on an unsymmetrical alkene,
तो रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, मतलब क्या है इसका? तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यू कैन सी इट्स टर्मिनल अल्कीन, इट्स 3-methyl butene, 1 butene, and if you want to add HCl across this डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि कार्बोकैटायन जनरेट कहाँ पर होगा। इफ यू लुक एट द position of this carbon-carbon double bond, either you will have the formation of a primary carbocation or a secondary carbocation. तो या तो प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी। एंड यू ऑलरेडी नो कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है दैट इज मोर स्टेबल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है क्लोराइड आयन, वो आके यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ अटैच हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू गेट नॉर्मली, ठीक है। बट वी हैव दिस प्रोडक्ट एज वेल, जिसमें क्लोरीन ऐसी जगह पर अटैच हुआ है जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनने के चांस ही नहीं था शुरू में। तो या तो फर्स्ट कार्बन पे बनता है या सेकंड पे बनता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो क्लोरीन इज अटैच्ड समवेयर एल्स। So what could have happened? And that is, we explain this anomalous behavior of the product by rearrangement in the carbocation. तो अगर आपके पास कोई ऐसा कार्बोकेटाइन बनता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, जिसके रीअरेंज होने के चांसेस हों टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जैसे इस केस में है बन रहा है, तो अगर इसके पास चांस है कि ये रीअरेंज होके एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाए, इट विल डू सो, राइट? So what happens as a result is that we have different percentages of these two products. And why is that? Because rearrangement has taken place. So initially we got this secondary carbocation, which has a chance to be converted into a more stable tertiary carbocation. तो a 1,2 hydride shift occurs, यहाँ से एक hydride आयन निकलेगा और यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो जब हाइड्राइड आयन यहाँ आएगा, हाइड्राइड इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो जब हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा, ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं they will go along with the hydrogen, leaving a carbocation here. And now you see that we have a tertiary carbocation. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो था वो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से टर्शियरी कार्बोकेटाइन में जनरेट होगा। तो ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना और फिर जो है वो रीअरेंज होकर टर्शियरी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट है 60% जो बनी है, दैट इज फ्रॉम द रीअरेंजमेंट दैट हैज अकर्ड फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी कार्बोकेटाइन। इसीलिए क्लोराइड आयन यहाँ पर आके अटैच हुआ। बट इट डजंट मीन के जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था उस पर क्लोराइड का अटैक ही नहीं हुआ। इट डज अटैक एट द सेकेंडरी एज वेल, तो इसीलिए इसकी भी 40% चांसेस है बनने के। बट स्टिल दिस वन इज हायर इन परसेंटेज।